Everybody, today we are going to study about the concept of excess demand, the concept of deficient demand, inflationary gap and deflationary gap. But before this, we should revise one thing, that economy produces a level of output where aggregate supply is equal to aggregate demand. When I say there is equilibrium in the economy, it means economy is producing a level of output where it matches with the aggregate demand in the economy. That is, AS is equal to AD. If AS is more than AD, what happens? There is a situation of unwanted, unsold stock of goods. If AS is less than AD, then there is a situation of reduction in stocks with the firm. In both the cases, the economy is not in equilibrium. Economy always attain equilibrium when aggregate supply is equal to aggregate demand. एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट पर भी. अगर हमें एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को समझना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव डिमांड वी हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड. जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर सभी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं तो उसको हम बोलते हैं द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. कुछ लोग जानबूझकर काम नहीं कर रहे हैं, काम अवेलेबल है बट वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कि जॉब्स आर अवेलेबल बट दे आर नॉट डूइंग. उनको हम फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही कंसीडर करेंगे. उन लोगों को नहीं बोलेंगे कि ये जो है अनएम्प्लॉयड है. दैट सिचुएशन वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड and if some people who are voluntarily unemployed, उसको हम अलग रख देते हैं. मेरा मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर उन लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, उन लोगों को भी सोच लिया जाएगा कि दे आर इन द जॉब. एक सिचुएशन है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. आई मीन टू से व्हाट हैपेंस कि एबल बॉडीड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट डू नॉट फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनके लिए काम नहीं है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि काम है, काम नहीं है लेकिन वो काम करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट विल टेक वन थिंग, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. What is this level of output? It is the level of output which economy produces when all the resources are fully employed. सपोज हमारी इकोनॉमी में सभी रिसोर्सेज काम पर लग गई हैं. जब सारी रिसोर्सेज काम पर लग गई हैं तो जो भी प्रोडक्शन का लेवल होगा उसको हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. एक एग्जांपल से मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं. लुक हियर. मान लो दिस इज एट एक्स एक्सिस विल टेक इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ऑन वाई एक्सिस विल टेक एग्रीगेट डिमांड. And suppose OF is full employment level of output. ये वो level of output है which economy will produce when all the resources are fully employed. यानी we cannot, हम इससे ज़्यादा produce नहीं कर सकते. If from 45 degree line we will represent aggregate supply curve. You see aggregate supply यानी output को हम लेते हैं x axis पे, उसको अगर हमें वर्टिकली मेजर करना है तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ 45 डिग्री लाइन. सो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और इकोनॉमी मैक्सिमम ओएफ प्रोड्यूस कर सकती है एफटी. एफटी एंड ओएफ आर इक्वल. ओएफ इज इक्वल टू एफटी बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री लाइन. 45 डिग्री लाइन के पॉइंट से दोनों एक्सिस सेम डिस्टेंस पे होंगे. तो इन ऑर्डर टू मेजर दिस डिस्टेंस वर्टिकली वी यूज 45 डिग्री लाइन, क्योंकि हम एडी को लेते हैं वर्टिकल एक्सिस पर. तो इकोनॉमी हमारी ओएफ प्रोड्यूस कर रही है, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमी हमारी प्रोड्यूस कर रही है एफटी लेवल. अगर हमारी इकोनॉमी एफटी लेवल प्रोड्यूस कर रही है, या हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी एफटी लेवल प्रोड्यूस करे, तो तभी पॉसिबल है जब एफटी लेवल के बराबर हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी. तो आर डिमांड कर्व शुड गो थ्रू this point, this ADE. This is effective demand. ADE is effective demand. Now what is effective demand?
Effective demand is that level of aggregate demand which is required in the economy to attain full employment level of output. को मालूम है हमारी इकोनॉमी उतना ही प्रोड्यूस करेगी जितना एग्रीगेट डिमांड है. अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड है 100 यूनिट्स की, तो आवर इकोनॉमी विल प्रोड्यूस 100 यूनिट्स इन ऑर्डर टू बी इक्विलिब्रियम. और मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट हमारी इकोनॉमी में है 500 यूनिट्स का, तो ये 500 यूनिट्स कब प्रोड्यूस होंगे? ये जब भी प्रोड्यूस होंगे व्हेन देयर विल बी corresponding demand of 500 units, and this corresponding demand of 500 units is known as effective demand. यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर जो भी डिमांड है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड. सो दिस ADE इज इफेक्टिव डिमांड. So we can say that this is aggregate demand. हम इतना मांग रहे हैं, हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं. FT is aggregate demand at full employment level of output, and OF is aggregate supply, and OF is equal to FT. The economy is in equilibrium, and here this is known as full employment level of equilibrium. तो इस इक्विलिब्रियम पर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है. इस इक्विलिब्रियम में हम ओएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी मांग रही है एफटी के बराबर, और हम जानते हैं एफटी इज इक्वल टू ओएफ. अब डेफिशिएंट डिमांड क्या है, ये एक्सेस डिमांड क्या है? देखिए डायग्राम हमने ले लिया. दिस इज एएस कर्व which is represented by 45 degree line. If this is full employment level of output, OF is full employment level of output, our economy will not produce more than this, and in order to produce OF level of output there should be a corresponding aggregate demand जो इस पॉइंट से जाए. This is aggregate demand जो इस पॉइंट से जाएगी, and this aggregate demand is known as effective demand. Now we have to compare it with the level of actual demand in the economy. Suppose this is the level of actual demand in the economy. This is actual demand AD0. अब actual demand AD0 है जो 45 डिग्री लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. यहां पर हमारी इकोनॉमी will produce ON level of output because our economy produces where AS is equal to AD. जितना AD होगा इकोनॉमी उतना ही प्रोड्यूस करेगी. AD हमारी कितनी है, इकोनॉमी भी इतना ही प्रोड्यूस करेगी. तो इस लेवल पर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, बट दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है OF, बट इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है ON. NF इज डेफिशिएंट डिमांड. NF is deficient demand. Now what is deficient demand? Deficient demand is that level of aggregate demand which falls short of full employment level of output. यानी full employment level of output is OF, but we are producing ON. हम इतना कम प्रोड्यूस कर रहे हैं NF. NF is deficient demand. ये deficient demand होने से क्या होगा? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम यहाँ होगा, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगी. अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंचना है तो इस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी पड़ेगी. And this is known as deflationary gap. Deflationary gap. This is known as deflationary gap. तो deflationary gap का मतलब है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी में NF लेवल ऑफ डिमांड को बढ़ाने के लिए. अगर हम इतना इन्वेस्ट कर देंगे इकोनॉमी में तो हमें इतनी डिमांड मिल जाएगी. So this is deflationary gap. एक्चुअली में हमें कितनी डिमांड बढ़ानी है? हमें बढ़ानी है डिमांड this is deficient demand, this is deficient demand, both are equal. This NF and this both are equal. If I say KS, NF is equal to KS because this is on horizontal axis and this is on vertical axis, तो confuse होने की जरूरत नहीं है. In some of the books, deficient demand can be measured here. In some of the books, deficient demand can be measured here. But ये जो gap है,
ये डेफिशिएंट डिमांड नहीं है, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है हमें। आपको मालूम है कि इकोनॉमी मल्टीप्लायर पर ऑपरेट करती है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो उससे इनकम में मल्टीपल इंक्रीज होगा, और जब मल्टीपल इंक्रीज होते होते जब फाइनली वो टोटल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हम काउंट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। यानी सपोज आपने इन्वेस्ट किया 100 करोड़ का, आपके यहाँ एमपीसी है 0.8, तो के की वैल्यू होगी 5। सोच लेते हैं एग्जांपल से कि एमपीसी आपके यहाँ है 0.8, के की वैल्यू होगी 5, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपने किया 100 करोड़ का। अब समझिए कि आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, के की वैल्यू 5 है, तो आपका जो टोटल इंक्रीज इन इनकम होगा वो होगा 500 करोड़। यानी आपको 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने से 500 करोड़ की डिमांड बढ़ जाएगी, दैट इज ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड ऑन प्राइस लेवल? प्राइस क्या होंगे? कम होने लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा, आउटपुट भी फॉल करेगा, सिचुएशन अच्छी नहीं होगी इकोनॉमी में, क्योंकि लोगों की जॉब्स जा रही होंगी, आउटपुट का लेवल फॉल हो रहा होगा, लोगों की इनकम फॉल हो रही होगी, जिसकी वजह से सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिशिएंट डिमांड। सो वी शुड नो व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, दैट इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हिच इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। If we want to produce full employment level of output in the economy, if we want a situation of full employment in the economy, we should have effective demand in the economy, a demand corresponding to full employment level of output. अगर हमारे पास actual demand कम है तो उसका मतलब है economy is in the situation of deficient demand, और ये हमें बताता है deflationary gap कि हमें कितना invest करना है economy में so that we can reach from ON to OF. OF is full employment. So next, come to what is excess demand. Income, output, employment, aggregate demand, and this is full employment level of output. Aggregate supply is represented by 45 degree line, और AS हम OF हमारा full employment level of output है, और we can say OF is equal to FT. अगर हमें OF प्रोड्यूस करना है, मतलब हमें FT प्रोड्यूस करना है, तो we should have corresponding aggregate demand to this level of output, and this is known as effective demand, ADE. This is the aggregate demand in the economy. अगर ये होगी तो ही full employment level of output प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब real situation क्या है? Now this is the actual demand in the economy. This actual demand AD1 से प्रेजेंट करते हैं, intersects 45 degree line और aggregate supply curve at E, OM. We are demanding OM in the economy. Economy में the actual level of aggregate demand है, वो है OM. But हम produce कर सकते हैं केवल OF. We cannot produce more than OF because all the resources are fully employed. So we cannot produce more than OF, but we are demanding OM. हम OM मांग सकते हैं, हम OF प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम OM मांग सकते हैं, but हम OM प्रोड्यूस नहीं कर सकते. This is excess demand. FM is excess demand. Now what is excess demand? Excess demand is that level of aggregate demand in the economy which is more than full employment level of output. Full employment level of output से जितना भी ज्यादा हम मांग रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सेस डिमांड. हम प्रोड्यूस कर सकते हैं केवल OF, बट वी आर डिमांडिंग OM. अगर मैं देखूं वर्टिकल एक्सिस पर, हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम मांग रहे हैं इतना ज्यादा, इसकी वजह से हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हम मांग रहे हैं इतना. दिस इज इक्वल टू दिस. सो हम इतना ज्यादा मांग रहे हैं, और वी कैन से हम इतना मांग रहे हैं, दिस इज एक्सेस डिमांड.
और दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, इसका मतलब है कि कितना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी से निकाला जाए या लोगों पर कितना टैक्स लगा दिया जाए, यानी कितनी अमाउंट से लोगों की परचेसिंग पावर कम कर दी जाए, सो दैट दिस एक्सेस डिमांड कैन बी कट। क्लियर? So inflationary gap is that amount of investment or money supply which should be brought out from the economy so that this level of excess demand can be cut. ये हम इन दोनों को इस एक्सिस पर भी और इस एक्सिस पर भी नाप सकते हैं। आपको किसी बुक में होगा इस एक्सिस पर नापना, चलेगा इधर भी, because this 45 degree line is helping us to measure this horizontal distance vertically. OF is equal to FT, OM is equal to ME, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अगर हम बोलेंगे हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है एक्चुअल, इसका मतलब है कि OM है, तो हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। बट ये जो दोनों कर्व्स हैं हमारे, इफेक्टिव डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कर्व, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। तो व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? AD1 माइनस ADE। आपकी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, आपकी इफेक्टिव डिमांड कम है, तो देयर विल बी इन्फ्लेशनरी गैप। एंड व्हेन इफेक्टिव डिमांड इज मोर बट एक्चुअल डिमांड इज लेस, देयर इज deflationary gap. That is clear now. Inflationary gap का effect क्या पड़ता है इकोनॉमी में? When there is inflationary gap or when there is excess demand, we are demanding more than what economy can produce. As a result, prices starts increasing. Output को नहीं बढ़ा सकते, employment को नहीं बढ़ा सकते, क्या चीज शूट करेगी? Only price. So this is all about the concept of effective demand and deficient demand. अभी थोड़ा सा मैं दोबारा करा रहा हूं इसको डायग्राम से, यू सी, तो आई होप कि सब समझ आएगा। हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए, कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। एंड वी नो दैट इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम वेयर AS इज इक्वल टू AD, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में उतना ही होगा जितना एग्रीगेट डिमांड है। अभी थोड़ा सा एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये इनकम, ये आउटपुट, ये एम्प्लॉयमेंट, दिस इज एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन को हम यूज कर रहे हैं एक्स एक्सिस को वर्टिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए दिस इज द लेवल ऑफ C, इसका मतलब है आर इकोनॉमी विल प्रोड्यूस OL बिकॉज AS इज इक्वल टू AD। देन थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई इकोनॉमी में, द न्यू लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड C plus I, there are two sectors, one is households, other are firms. Now economy will produce OM. Suppose और डिमांड बढ़ गई इकोनॉमी में, C plus I plus delta I. Now economy will produce OM. And suppose OF is full employment level of output. हमारे पास डिमांड थी दिस मच, हमने दिस मच प्रोड्यूस किया, डिमांड हमारे पास होगी डिमांड हमारे पास ये होगी, हमने ज्यादा प्रोड्यूस किया, डिमांड और ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोड्यूस किया। हम इतना प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो डिमांड इतनी हमारे पास होनी चाहिए, हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व इस पॉइंट से जाना चाहिए बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। तो इफ आवर एग्रीगेट डिमांड कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट, this is effective demand. You see, whenever level of aggregate demand increases, level of output also increases. When level of aggregate demand was C, we were producing OL. When the level of demand was C plus I, we are producing OM. When the level of aggregate demand is C plus I plus delta I, we are producing OM. Full employment level of output के लिए
हमें एग्रीगेट डिमांड का लेवल ADE रखना होगा, तो हम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड दिस इज इफेक्टिव डिमांड। ये सब हमारी है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये सब डेफिशिएंट डिमांड है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट वी हैव टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, और ये एग्रीगेट डिमांड तभी इंक्रीज हो सकती है जब इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाए। यहाँ C था, ये यहाँ से हमने C में I को ऐड किया, यहाँ C प्लस I था, इसके अंदर हमने डेल्टा I को ऐड किया, फिर ये था, फिर हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दी, वी गॉट दिस। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए। एग्रीगेट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए वी शुड हैव कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीगेट डिमांड टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। OL प्रोड्यूस क्यों किया? क्योंकि OL के बराबर एग्रीगेट डिमांड है। OM क्यों प्रोड्यूस किया? क्योंकि OM के बराबर एग्रीगेट डिमांड है। ON क्यों प्रोड्यूस किया? क्योंकि ON के बराबर एग्रीगेट डिमांड है। OF प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसके बराबर ही एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए। ये बहुत क्लियर है, ये सब मैंने नापा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। नाउ सेम थिंग वी कैन एक्सप्लेन ऑन वर्टिकल एक्सिस। कुछ बुक्स में आप ऐसे देखेंगे, कुछ बुक में दूसरे तरीके से। सपोज X, Y, origin, and this is 45 degree line through which we can compare between the horizontal axis and vertical axis. Suppose this is the level of aggregate demand in the economy, which is represented by C. So your aggregate demand is how much? This is the level of aggregate demand in the economy. This is OM. OM is level of aggregate demand. N1 कर देता हूँ यहाँ. Suppose this is C plus I. C plus I का मतलब this is OM is the level of aggregate demand. OM1. Both are equal. 48 degree line से. Now, third is C plus I plus delta I. Now the level of aggregate demand is this much. This is aggregate demand, and this is suppose G. OG is level of aggregate demand, and OG1 is level of aggregate supply. Both are equal. You see, हम इधर नापें या इधर नापें, बात एक ही है. But this distance between two curves is known as gap. और ये बीच में जो distance है, that is known as demand, deficient demand और excess demand. Suppose this is full employment level of output. This is full employment level of OF. यानी इतना हम मांग रहे हैं aggregate demand, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी aggregate demand कितनी है? इस लेवल पर OF के बराबर. तो हमारा जो कर्व है वो यहां से जाना चाहिए. OF एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, इतना डिमांड के लिए हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. इट्स क्लियर? तो दोनों डायग्राम से हम नाप सकते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से नाप सकते हैं. सो वंस अगेन और आई टू मेक इट मोर क्लियर, this is 45 degree line. Aggregate supply is represented by this line. This is full employment level of output, full employment, and this curve which passes through this point is effective demand. इस लेवल पर aggregate demand इतनी होगी तो हम इतना प्रोड्यूस कर पाएंगे, and this is equal to this. Suppose the actual demand in the economy is this. Economy produces ON. And this NF is deficient demand, and this is deflationary gap. इसका मतलब है इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी पड़ेगी. और सपोज दिस इज एक्चुअल डिमांड इन द इकोनॉमी,
and it intersects here. This is AD1 and this is OL, this is excess demand. इसका मतलब कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमें कम करनी पड़ेगी. We have to increase this much of investment and we have to decrease this much of investment. So in the economy we can have both the situations, situation of excess demand and situation of deficient demand. तो हमारे पास deficient demand कितनी है? NF. अगर वर्टिकल एक्सिस पे बतानी है तो हम बता सकते हैं, स्केल लेंगे एंड दिस इज डेफिशिएंट डिमांड. अगर हमें एक्सेस डिमांड बतानी है कितनी एक्सेस डिमांड है, वी कैन टेल दिस इज एक्सेस डिमांड एंड दिस इज डेफिशिएंट डिमांड. वी मैच ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, वी विल बी गेटिंग excess. This is deficient demand which is equal to this and this is excess demand which is equal to this. Both the axes we can measure, but this is deflationary gap. ये पूरा का पूरा deflationary gap है, inflationary gap है. इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमें कम करनी पड़ेगी और इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ानी पड़ेगी अगर deflationary gap से full employment पे जाना है, और अगर inflationary gap से full employment पे आना है तो हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी. So topic is very easy. I can explain the full question. If the question comes, what is deficient demand? We can say deficient demand is that level of aggregate demand which falls short of full employment level of output, and it will give rise to deflationary gap. Deflationary gap determines how much investment should be introduced in the economy to curb deficient demand. And what is excess demand? It is the situation when the aggregate demand in the economy is more than full employment level of output. It will give rise to inflationary gap, and inflationary gap is that amount of money supply in the economy which should be eliminated so that the situation of now we can take this concept with the help of schedule also. Suppose economy में income 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 and C is 60, 140, 220. I'm assuming MPC is 0.8, autonomous consumption is 60. 80 हम ऐड करते हैं whenever there is increase of 100 rupees in the income. 300, 380, 460 and 540. Suppose investment in the economy is 40. You know investment is constant because it is autonomous. So C plus I is the level of aggregate demand. This is the level of AD in the economy. If I present this with the help of diagram, the diagram will be like this. This is 45 degree line. This is AD in the economy, and equilibrium of the economy take place as 500. AD 500 is, so this is 500. This is also 500. So this is the demand and this is the supply, aggregate supply. Economy is in equilibrium here. And suppose this is the equilibrium. If I write AS, at this point AS is equal to AD. So this is a simple case of equilibrium. Now suppose the full employment level of output is 600. This is full employment, suppose. So हमको increase करना है. Now there is a situation of deficient demand. हम 100 units कम produce करते हैं. Our economy can produce 600 units at maximum when all the resources are fully employed. But we are producing only 500 units. 100 units का production बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Now come here. If suppose I invest इस level पर मैं 20 की investment कर देता हूँ. If I increase investment of 20. Hit and trial से economy decide करती है. So C plus I plus delta I or new aggregate demand is
120, 200, 280, 360, 440, 520 and 600. Now here aggregate demand 600 हो गई है और aggregate supply, y is also known as aggregate supply, ये भी 600 हो गई है. तो हमें सिर्फ 20 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा इसके लिए, यानी ये जो हमारा कर्व है you see this delta I is 20 and intercept यहाँ किया and this is 600. So change in investment हमने किया केवल 20 यूनिट्स का और चेंज इन इनकम हो गया हमारा 100 यूनिट्स, ये 100 यूनिट्स एंड दिस इज 20 यूनिट्स. So this is deflationary gap. Deflationary gap. And this is deficient demand. It is now clear. In order to increase the aggregate supply by 100 units, हम 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि 500 यूनिट्स की ही डिमांड थी. अगर हमें 600 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है तो देयर शुड बी अ डिमांड ऑफ 600 यूनिट्स और हमने केवल एग्रीगेट डिमांड में 20 यूनिट्स से इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और हमारी एग्रीगेट डिमांड 100 से बढ़ गई. ये सब कैसे हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर. दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर, क्योंकि हमारी एमपीसी 0.8 है तो के की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5. नाउ लेट्स एक्सप्लेन द व्हाट इज मल्टीप्लायर. दिस इज क्लियर. यू सी वी हैव इन्वेस्टेड ओनली 20 यूनिट्स बट हमारी 100 यूनिट्स की इंक्रीज हो गई. आई एक्सप्लेन दिस नाउ विद द हेल्प ऑफ multiplier. Multiplier is a number by which if change in investment is multiplied, change in income is determined. So multiplier is a number which is multiplied by change in investment determines change in income. So we can say multiplier is the ratio of change in income to change in investment. First thing. Now value of multiplier depends on change in depends on MPC. मेरा मतलब है K is equal to 1/1 minus MPC or 1/MPS. If MPC is 0.8, K is 1/1 minus 0.8, 1/0.2 is 5. So value of K will be 5. तो इसका मतलब हुआ if K 5 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 20 है तो चेंज इन इनकम होगा 5 into 20, 100 करोड़ का. If MPC is 0.9, the value of K will be 1/1.0.9, 1/0.1 is 10. ये अगर MPC 0.9 है तो K की वैल्यू 10 हो जाएगी. अगर MPC हमारी पूरी 1 है, 0.9 नहीं 1 है, तो K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी. If MPC 0 है तो K की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी. By using this